Hello everyone, myself Dr. Anju Ehlawat, Assistant Professor of Botany, Hindu Girls College, Sonipat. Today I am going to present a lecture on structure of TMV and bacteriophage for undergraduate students of BSc first semester under the guidance of Directorate of Higher Education, Haryana. First, in this, we will study about the classification and structure of TMV, life cycle of TMV, classification and structure of bacteriophage, life cycle of TMV, lytic life cycle, lysogenic life cycle, and difference between lytic and lysogenic life cycles. Firstly, we will take the classification of TMV. TMV comes under the division vira and subdivision ribovira, as it is having RNA as the genetic material. The class is Ribohelica, order Virales, suborder Phytophaginae, family Marmoraceae, and the genus is Marmor. Tobacco mosaic virus was discovered in the year of 1892 by Dmitry Ivansky from the tobacco plant, and the viruses infect the healthy plants through vectors like aphids and locusts, etc. The first visible symptom of tobacco mosaic virus is discoloration of leaf color along the veins, and it will show a typical yellow and green molting, which is the mosaic symptom. The downward curling and distortion of young apical leaves occurs, and the plant becomes stunted and the yield is affected. Now, the ultrastructure of the TMV. TMV is basically a rod-shaped helical virus measuring from 280 to 150 micrometers with a molecular weight of 39 into 106 daltons, and it is mainly made up of two constituents, that is the protein and the nucleic acid. The protein coat form the capsid and the core is made up of the nucleic acid. The protein coat is mainly made up of approximately 2130 identical protein subunits, which are known as capsomeres, and they are present and around the central single-stranded RNA molecule, which is present in a helical form. The genetic information necessary for the formation of the complete TMV particle is contained in its single-stranded RNA, and the RNA consists of 6500 nucleotides, and the ratio of protein and nucleic acid is 94.4 is to 5.6, means 94.4% protein is present and 5.6% nucleic acid is present. So basically, in structure of TMV, two things are present. Firstly, the protein, which is made up of 2130 capsomeres, and RNA is present in the helical form in a core or central body, and nearly 95% of the body is made up of protein and 5% body is made up of RNA, and this RNA is in helical form and it is single stranded type. So the main two functions of RNA is self-replication, and second one is the synthesis of virus-specific proteins, for which it takes the raw material from the host cell. And this is the structure of the TMV. Here in the yellow structure there is the capsid or the capsomere subunits, and in the center, that is of maroon color, it forms the helical RNA. Now about the multiplication of the TMV. The complete TMV particles enter inside the host body by the process of pinocytosis. In pinocytosis, the particles will enter inside the host body by rupturing or making the vacuoles in the body of the host, and then it will enter inside the host body. The viral genome, that is the single-stranded RNA, and the capsomere is separated inside the host body.
and RNA moves into the nucleus, and with the help of RNA polymerase and transcriptase, which are formed by the host body, forms the complementary RNA strand, and now the single stranded RNA get converted into the double stranded RNA. So the double stranded RNA moves inside the cytoplasm and serve as the mRNA, and it takes part in the formation of the protein molecules, and multiplied viral particles move from one cell to another cell by the plasmodesmata or through the phloem. Now we will see through this diagram that there is entry of the whole viral body of the TMB inside the host body, and then after entering inside the host body, the RNA and the proteins get separated, and then the single stranded RNA get converted into double stranded RNA by taking the RNA polymerase and transcriptase enzymes which are formed inside the host body. Means it will use the machinery of the host body, and then it will form the complementary strand of the RNA of the host of the viral body, and then the single stranded RNA get converted into the double stranded RNA. Then from this double stranded RNA, there formation of the mRNA, that is the messenger RNA, and then this messenger RNA will form the proteins, and then these proteins will move, then these from this protein molecule the whole body is now formed, the RNA is formed and the proteins were formed. Then they will merge, they will come together and they will form the whole body, and then from one cell to another cell they will move through the plasmodesmata or through the phloem. So in this particular process there is multiplication of the TMB. Now second one is the bacteriophage. Firstly we will take the classification of the bacteriophage. It will comes under the same division, that is the vira, and the subdivision is the deoxyvira, as it consists of DNA as a genetic material. The class is deoxybinase as it is of biennial form, and the order is virales, suborder is Phagni, and the common name is the bacteriophage. So what are bacteriophage? Bacteriophage are basically the viruses which attacks the bacterial cell, and then it multiply inside the bacterial cell, and finally there is lysis, and these are called as the bacteriophage. So ये वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उसके बाद बैक्टीरियल बॉडी के अंदर जाकर वो मल्टीप्लाई करते हैं. सो ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ जाके मल्टीप्लाई करते हैं उनको हम लोग बैक्टीरियोफाजिस बोलते हैं. These phages possesses angular head and the contractile tail and multiply independently of bacterial DNA. अब जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो है वो एक एंगुलर हेड है जिसके अंदर DNA स्ट्रैंड जो है वो प्रेजेंट है, और बिल्कुल लास्ट में जो है टेल फाइबर जो है वो प्रेजेंट है होते हैं, एंड दीज टेल फाइबर्स हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द वायरल बॉडी ऑन द बैक्टीरियल बॉडी, एंड the DNA will move inside the bacterial body. जबकि हमने TMV में क्या देखा कि TMV के अंदर पूरी की पूरी जो बॉडी है वायरस की वो एंटर करती है होस्ट बॉडी के अंदर, लेकिन बैक्टीरियोफाज में ऐसा नहीं होता है. बैक्टीरियोफाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ द DNA विल मूव फ्रॉम द वायरल बॉडी टू द होस्ट बॉडी, कि सिर्फ DNA मूव करता है. अब वो हेड से नेक्स्ट बॉडी के अंदर होस्ट बॉडी के अंदर मूव करता है कैसे? कोर के थ्रू. तो आप देखिए कि जो हेड है वो टेल फाइबर के साथ या बेसल प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू अ कोर, और ये जो कोर है ये बेसिकली क्या है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके आसपास जो है प्रोटीन शीट जो है वो कॉइल्ड होती है, और ये जो टेल है जिसके आसपास प्रोटीन शीट कॉइल्ड होती है दैट इज़ नोन एज द कोर. और
जो हेड है और जो कोर है उनको आपस में जो जोड़ता है, दैट पार्ट इज नोन एज द कॉलर। और नीचे की तरफ जो है, जिसके थ्रू जो एंड प्लेट है या फिर जो बेसल प्लेट है वो जुड़ती है, दैट इज नोन एज द टेल फाइबर्स, एंड विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स it will attach to the bacterial body. Now the bacteriophage are obligate intracellular parasites that infect the bacteria. Almost every group of bacteria is subject to infection by one or more viruses or bacteriophages, as they are known the phage for short form and it will take from a Greek word, that is the phagine, which means to eat or to nibble. Bacteriophage attacks the E. coli are called as the colegophage and they are designated by T type, यानी कि ऐसे बैक्टीरियोफाजेस, ऐसे वायरसेस जो ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम लोग कॉलीफेजेस बोलते हैं और उनको हम लोग टी टाइप के बैक्टीरियोफाजेस बोलते हैं। और ये जो टी टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाज है वो कितने टाइप के हैं? दे आर मेनली ऑफ 17 टाइप फ्रॉम T1 टू T17 एंड दिस नंबर इज गिवन बाय ए मैक्स डेलबर्ग इन द ईयर ऑफ 1938। अब इनको भी हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, टी इवन फाजेस एंड टी ऑड फाजेस। तो T2, T4, T6, T8 ये जितने भी हैं जिनके अंदर इवन नंबर है, दे आर नोन एज द टी इवन फाजेस, और जिनमें भी T3, T5 ये सब जो हैं दे कंसिडर्ड अंडर द टी ऑड फेजेस। Now the structure of the bacteriophage, as I already told you, it consists of mainly two parts, that is the head and second one is the tail. The head mainly consists of they are variable in size and shape and they are mainly isohedral type, and the number of sides may be variable also. The head or capsid is composed of nucleic acid molecule, usually the DNA, which is present inside the head body, and they are coiled within the protein coat or the capsid, and the head body is mainly made up of the protein molecules. Tail, many but not all the phages have tail attached to the phage head. The tail is a hollow tube through which the nucleic acid passes during the infection. As I already told you, the tail include a core, a tail sheath, base plate, tail pins and tail fibers, all of which are composed of different proteins. And in the more complex phages like T4, the tail is surrounded by a contractile sheath which contract during the infection of the bacterium, and with this contraction the DNA will move from the head to the bacterial body. And at the end of the tail phages, T4 have a base plate and one or more tail fibers which are attached with these plates. The base plate and the tail fibers are involved in the binding of the phage to the bacterial cell, and not all phages have the base plates and the tail fibers. So this is the basic structure of the bacteriophage, in which there is presence of the polyhedral tail, then there is presence of the collar, below the collar there is presence of the sheath, and around the sheath on the sheath is present around a core body which is hollow, and this sheath is mainly made up of the protein, and below that there is presence of the base plates, and on the below of the base plate there is presence of the tail fibers, and with the help of the tail fibers it will attach with the bacterial body. Now the replication of the viruses get replicated in mainly the 5 steps, and these 5 steps are absorption or attachment, then penetration, then replication, then assembly, and finally the release of the newly formed viruses. So firstly, in case of the absorption, the virus will attach to the bacterial body. Then in case of the penetration, the nucleic acid of the virus move through the plasma membrane into the cytoplasm of the host cell. यानी कि absorption में क्या हुआ? Absorption में attachment हुई host body के ऊपर virus की, then
पेनिट्रेशन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है होस्ट बॉडी की, उसको पंक्चर किया गया बाय द वायरल बॉडी, और उसके बाद जो उसका डीएनए था इट विल मूव फ्रॉम हेड थ्रू द कोर and then inside it will enter into the cytoplasm of the host cell. Then the replication, in case of the replication, the viral genome contain all the information necessary to produce the new viruses, and once inside the virus induces the host cell to synthesize the necessary components for its replication. तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि वायरल जीनोम जो है उसके पास हर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से उसको काम करना है और अपनी बॉडी बनानी है, लेकिन उसके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती, तो इट विल यूज़ द मशीनरी ऑफ द होस्ट बॉडी, और उसके बाद वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करता है, यानी कि वो प्रोटीन पार्ट बनाना शुरू करता है, हेड बनाना शुरू कर देता है, और हर एक पार्ट जो है वो अलग अलग बनता है। हेड अलग बनेगा, कॉलर अलग बनेगा, कोर अलग बनेंगे, एंड प्लेट्स अलग बनेंगे, टेल फाइबर जो है वो अलग बनेंगे। देन इन द नेक्स्ट स्टेप देयर इज असेंबली ऑफ ऑल द पार्ट्स, कि जो भी न्यूली सिंथेसाइज्ड पार्ट्स हैं वो सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे, असेंबल्ड हो जाएंगे, ताकि एक प्रॉपर बैक्टीरियोफाज वायरस का स्ट्रक्चर बन पाए, जो कि हमने पीछे देखा था। एंड देन द रिलीज, इन केस ऑफ द रिलीज, कि जो असेंबल्ड वायरसेस हैं, जो न्यूली असेंबल्ड वायरसेस हैं, दे विल कम आउट ऑफ द होस्ट बॉडी, कि वो होस्ट बॉडी से बाहर आ जाते हैं। देन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है दैट विल टेक्स प्लेस अंडर द टू टाइप्स ऑफ द साइकिल। फर्स्ट वन इज द lytic cycle which is virulent type, and second one is the lysogenic cycle which is non-virulent type. So firstly we will take the lytic cycle which is virulent. Why it is known as the virulent? Because it ends in the lysis of the host body, यानी कि फाइनली जो होस्ट बॉडी है उसकी डेथ हो जाती है, इसलिए हम इसको लिसिस बोलते हैं, इसीलिए इसको वायरुलेंट भी कहा जाता है। वहीं पर जो लाइसोजेनिक इन्फेक्शंस होते हैं या जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है, उसके अंदर जो हमारी न्यू बॉडी फॉर्म्ड होती है, जो होस्ट बॉडी होती है, उसकी लिसिस नहीं होती है, उसकी किलिंग नहीं होती है। अब हम इनको एक वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्टली इज़ द लाइटिक साइकिल। जो लाइटिक साइकिल होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर साइकिल जो है वो 5 फेजेस के अंदर कंप्लीट होती है, इसी तरीके से इसमें भी होता है। तो फर्स्ट स्टेज इज़ द एब्जॉर्प्शन स्टेज। As I already told you, in case of the absorption stage, there is attachment of the virus body on the host body with the help of the tail fibers, कि जो tail fibers है उसके through attachment हो जाती है। Then the host specificity of the phage is usually determined by the type of the tail fiber that a phage has. Tail fiber bend to anchor the pins and base plates ऑफ द सेल सरफेस। वो क्या करती हैं कि जो उनके टेल फाइबर्स हैं वो उनको अच्छे से जचा लेती हैं, उनसे वो अच्छे से पकड़ लेती हैं होस्ट बॉडी को। देन अकर्स द पेनिट्रेशन, टेल शीथ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द होलो टेल फाइबर इज पुश्ड थ्रू द बैक्टीरियल एनवलप। देन द phages that don't have contractile sheath use other mechanism to get the phage particle through the bacterial envelope, and some phages have enzyme that digest various components of the bacterial envelope। कि जिन होस्ट वायरसेस के अंदर टेल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने टेल फाइबर्स के थ्रू जो है उनको वो पुश करते हैं बैक्टीरियल एनवलप के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है उनके अंदर होल्स बन जाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म वो अपना जो डीएनए है वो मूव करा देते हैं इनसाइड द होस्ट बॉडी। लेकिन कई ऐसे वायरसेस भी होते हैं जिनके अंदर ये टेल फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो वायरल बॉडी है वो कुछ एक एंजाइम्स जो है
डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल एनवलप है वो रप्चर हो जाता है, उसके अंदर पंक्चर होने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और उसके थ्रू जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटीरियल है वायरस का, वो मूव कर जाता है inside the host body. Then the replication, the phage nucleic acid takes over the host biosynthetic machinery. As I already told you that the viral body virus is not having its own machinery for replication, so it depends upon the machinery of the host body, and it will take or overcome the machinery of the host body, and it will use the host body machinery for its replication, and the phage specified mRNA and proteins are made inside the host body. Phage utilizes the host cell nucleotide to make the copies of its genetic material and the cell's amino acid to make the proteins. So, early mRNA codes for early proteins which are needed for phage DNA synthesis and for shutting off host DNA. RNA एंड प्रोटीन बायोसिंथेसिस। तो ये क्या करती है कि जो वायरल डीएनए है वो एंट्री करके होस्ट बॉडी के अंदर उसकी मशीनरी को ओवरकम करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो होस्ट बॉडी का जो आरएनए है वो फिर अपना आरएनए ना बनाकर वो जो वायरल आरएनए है, जो फाज आरएनए है, एमआरएनए है और जो प्रोटीन्स है उनको फॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या है उसकी मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो बननी शुरू हो जाती है इनसाइड द होस्ट बॉडी। आफ्टर फाज डीएनए इज मेड, लेट एमआरएनएज एंड लेट प्रोटीन्स आर मेड। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द असेंबली, दैट इज द फोर्थ स्टेप. The nucleic acid and the protein components which are synthesized inside the host body of the virus particles get assembled with the protein capsid surrounding the phage DNA, and then an enzyme, that is the lysozyme, is synthesized inside the host body, and finally there is release of the newly formed viruses from the bacterial cell by breaking the cell wall of the bacterial cell with the help of the lysozyme, which is produced during the fourth step, that is during the assembly of the viruses. And finally there is lysis of the bacterial body, there is killing of the bacterial body, and all the viruses get come out of the host body, and within 25 to 35 minutes the complete cycle, that is the lytic cycle, is completed. Now there are two periods. First one is the eclipse period, that is the time between the infection and assembly of the new phages, and second one is the latent period. This is the time between the infection and release of the new viral particle by destruction of the host cells. Now this is the diagrammatic representation of the lytic cycle. In the first step there is the absorption, in which the bacterial cell is infected by the viral body, and then the penetration, in which only the DNA will enter inside the bacterial body, and then synthesis of the early proteins, means the machinery is already taken up by the phage DNA, and the replication of the viral DNA will takes place, and then there is formation of the new proteins and new phage capsid, and then assembly of the new phages, and finally there is the lysis, due to which there is release of the new virus particles by the rupturing of the bacterial cell wall. Now the second cycle is the lysogenic cycle. In case of the lysogenic cycle, the first two steps are similar to the lytic cycle, but there is no lysis of the bacterial body. There is only there is replication of the host body, but there is no lysis of the bacterial body. The first two steps are similar, कि अटैचमेंट और पेनिट्रेशन तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे कि लिटिक साइकिल में हुआ था, लेकिन इसके बाद वाला जो स्टेप है उसके अंदर इंटीग्रेशन होता है और रेप्लिकेशन होता है,
इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो डीएनए है, जो फाज डीएनए है, यानी कि जो वायरस का डीएनए है, वो जुड़ जाता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ और फाइनली हमारे पास एक हाइब्रिड डीएनए जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब वो जो हाइब्रिड डीएनए है दैट इज नोन एज द प्रोफाज और द टेम्परेट फाज, और उसके बाद वही रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है और वो रेप्लिकेट करता है और उसकी वजह से जो है पूरी की पूरी जो बॉडी है, बैक्टीरियल बॉडी जो है, उसकी फॉर्मेशन होती है और हर एक बैक्टीरियल बॉडी के अंदर नया डीएनए होता है दैट इज ऑफ हाइब्रिड टाइप। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, जो वायरस है उसने इन्फेक्ट किया बैक्टीरियल सेल को, फाइनली जो डीएनए था वायरस का वो एंटर कर जाता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में देखिए आप लाइट ग्रीन कलर का, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर का अपना डीएनए है, और इसके बाद इससे एक डार्क ग्रीन कलर का जो डीएनए है दैट इज ऑफ द वायरल डीएनए, इट विल अटैच विद द बैक्टीरियल डीएनए एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द फाज डीएनए विच इज the combination of the bacterial DNA and the viral DNA। और जब ये बैक्टीरियल डीएनए है ये डिवाइड करता है, वो जैसे बाइनरी फिशन के थ्रू वो मल्टीप्लाई करता है, तो हर एक जो बैक्टीरियल सेल बनता है, अब जो नया बैक्टीरियल सेल बनता है उनके अंदर नया टाइप का डीएनए होता है दैट इज ऑफ प्रोफाज टाइप ऑफ डीएनए। So there is some differences also between the lytic cycle and the lysogenic cycle. The first very important difference between the lytic cycle and the lysogenic cycle is that the lytic cycle is of virulent type, whereas the lysogenic cycle is non-virulent type. The lytic cycle is virulent because in the last the bacterial body or the host body get lysed up or get killed, whereas in case of the lysogenic cycle it is not killed. The second difference is that in case of the lytic cycle the viral genome does not integrate with the host DNA, whereas in case of the lysogenic cycle the viral DNA get integrated with the host DNA. Then in case of the lytic cycle the host DNA is hydrolyzed in the lytic cycle, whereas in case of the lysogenic cycle the host DNA is not hydrolyzed during the lysogen. Then in case of the lytic cycle the machinery of the host body is completely taken over by the viral genome, whereas in case of the lysogenic cycle the cellular machinery is disturbed slightly but it is not fully taken over by the viral body. And then as I already told you, in the last the host cell get lysed in the lytic cycle, whereas in case of the lysogenic cycle it is not lysed up, and so we can say that lytic cycle is very much harmful than the lysogenic cycle. Now these are some of the important questions from this topic. First one is describe the life cycle of the plant virus, in which we will explain both the cycles. Then with the suitable diagram explain structure and composition of the TMV. Then comment on bacteriophage. The next common question is the describe lytic cycle of the bacteriophage. Then describe lysogenic cycle of the bacteriophage, and lastly the difference between lytic cycle and lysogenic cycle. Thank you so much student. I think my PPT is helpful for you कि आप लोगों को ये समझ आ पाए कि जो बैक्टीरियोफाज हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, टीएमवी का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, लाइटिक साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। थैंक यू सो मच।